यस, आ गई हमारी दीप्ति मैम। गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। एवरीवन। गुड दिल्ली मॉर्निंग में तो मैम। ठंड बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा गुड रही है, मॉर्निंग सही। Yesterday was दीप्ति। so cold. Yes. Yeah, but मजा आ रहा है। Never Hmm. seen this kind of a winters in Yes. January. और Normally, यस, 20th के बाद थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, rather after Hmm. 15th, like. So, but this is going up constantly. पेशेंस को वो कर रहा है हमारा, हाँ, चेक कर रहा है हमारा हाँ, पेशेंस को। यस, हाँ, but इस बार शुरू भी लेट हुआ था ना। I mean, शुरू, winter started या quite या late. Now it will जयपुर decrease. एंड दिल्ली इज मोर और लेस सेम, 1 or 2 डिग्री का The फर्क है। Delhi and Punjab is same. Jaipur is slightly lesser than Delhi. स्लाइटली, वेरी स्लाइट, Yeah, हाँ, because the sun shows. या एक्चुअली जयपुर में दिन इज बेटर, बट आई थिंक हाँ, रात इज वेरी इज इक्वली कोल्ड. कोल्ड, हाँ, या धूप इवन द होती है मॉर्निंग्स। ना। Because of हम्म, sand, now it's so cold. या हम्म। विजय सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, good morning. गुड या वो मॉर्निंग. नदर्न लाइट्स रोज दिखा देते हैं, हाँ, रोज आइसलैंड, दिखाते हैं। नॉर्वे Yeah, की। yeah. So it Now is the good. weather should become better. हाँ, I Yeah, hope. yeah. Today it will be better. Sunny. Yeah, you read that in the weather forecast? Yeah, there is better, 1 degree more than the usual. 1 degree lesser. Yeah. Okay. That will be a respite. हमारे, Okay. Yeah, but I'm तो full on enjoying the winters so much. मैं तो यस, बड़ा मजा कर रही हूँ. I'm constantly drinking वो अजवाइन सौंफ का वो गरम पानी और अदरक का पानी, and all day I just keep drinking all of this. Not I'm not eating too much, so it's all taken care of. Normally होता है ना, आप रेवड़ी गजक ये सब खाते रहते हो, पराठे winters में तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. Eating less but constantly drinking these kind of beverages which just keep make me full and warm all the time, and giving a glow on the face also. I felt such a difference ever since the winters have risen so much because of the eating and drinking. अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पूरे दिन में पानी पीती रहती हूँ कुछ ना कुछ. Sometimes it's a green tea, sometimes it's अदरक का पानी. I'm like only अदरक का. Sometimes it is अजवाइन और सौंफ का. So that's constantly happening throughout the day. Even right now, the water that I keep here this is cinnamon and ajwain water, which is like a boiling water. So uski wajah se health is feeling so good. There's so much of energy, and the skin quality, hair quality is improving so much, I feel, because we are what we eat. सो नाइस, यू Okay. ऑलवेज गिव सो ब्यूटीफुल टिप्स मैम। हाँ, इसीलिए मैं यस, डेलिबरेटली देती हूँ ना, ये मेरा प्रोफेशन भी है. यस, My vocation. थैंक यू। Yeah. So now today we are on to past में thank you बोलने वाला last day है, which is chapter number 12, magical people who made a difference. हमारी जिंदगी में किन की वजह से हमारी जिंदगी बदली जब हमको सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी से बात करने की, किसी के सपोर्ट की, किसी के सहारे की, किसी के साथ होने की, किसी का हाथ पकड़ने की, किसी का मे बी जस्ट वो वाला एक सेंटेंस उन्होंने बोला और हमने उस पर एक्शन लिया और हमारी जिंदगी बदल गई. सो वी ऑल हैव सच पीपल इन आवर लाइफ, बट आज बैठ के हमको वी हैव टू सिट एंड ड्वेल इन इट. तो आज हम पास्ट लेन में जाएंगे और देखेंगे हुआ दोज 3 पीपल इन आवर लाइफ, बिकॉज आज हमको सिर्फ 3 लोगों के बारे में लिखना है और जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में मॉन्यूमेंटल डिफरेंस आया, या हमारा कोर्स ऑफ लाइफ बदल गया, या हमको चलने की एक राह मिली, और वट एवर इट इज. दिस इज वॉट इज अबाउट दिस चैप्टर, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस. एंड इसमें जो इमेज है उसमें वी विल सी दैट एल्बम. एल्बम हमेशा सिग्निफाई करता है पुरानी यादों को, पुरानी फोटोज को. सो ये एल्बम बना हुआ है और उसमें 3 फोटोज हैं और उसमें बहुत सारा ग्रैटिट्यूड के स्पार्कल्स नजर आ रहे हैं. सो हमको अपनी मेमोरी के एल्बम में से 3 लोगों को निकालना है जो हमारी लाइफ में इंस्ट्रूमेंटल हुए हैं. इवन इफ इट वॉज 1 मंथ अगो, अगर कोई है वो भी पास्ट ही होता है, और 10 साल पहले तब भी वो पास्ट होता है. बचपन में कोई ऐसा मिला जिसने हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रखा, वो भी पास्ट है. ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नेबर हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, मम्मी हो सकती है, पापा, भाई बहन, कजिन्स, नानी, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी बॉस हो सकता है आपका पास का, या जो भी है. 3 पीपल जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंस आया, एंड सिंस देन लाइफ हैज नॉट बीन द सेम अगैन. सो दिस इज व्हाट. सो हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं इस वाले चैप्टर को, और हमारे डेब्यू रीडर हैं पंकज रस्तोगी आज पढ़ने के लिए. So, गुड हाँ मॉर्निंग पंकज जी, मैम. गुड मॉर्निंग. या
Day 12. Magical people who made a difference. At times, our own light goes out and rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Schweitzer, 1875 to 1965, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons
why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Make sure you do this magical practice with all three people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. Here is an example of what you might say. Sarha, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I could not be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. It is very important that you say the reasons why you are grateful. And you cannot say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that was not enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That is the magic of life, and that is the magical power of gratitude. Magic practice number 12. Magical people who made a difference. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Number 3, work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Thank Pankaj you, ma'am. for your first time reading. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. What city are you from? From Delhi, Dwarka. Okay, great. Okay,
सो कमिंग टू दिस चैप्टर, ये बहुत सुंदर कोट है बाय एल्बर्ट श्वाइत्ज़र, नोबेल पीस प्राइज विनिंग फिलोसोफर, दैट कभी कभी होता है दैट हमको कभी कभी टाइम्स इतना डार्क लगने लग जाता है, हमें लगता है कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, क्या कोर्स है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ मोटिवेशन नहीं रहता है, समझ में नहीं आता। यहाँ कभी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही होती है एंड वी डोंट नो दैट हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन, व्हाट टू डू अबाउट इट। सो ऐसे जैसे मतलब एक स्पार्क की तरह कोई आता है, मतलब एनी पर्सन अपीयर्स फ्रॉम नोवेयर, और हमको रास्ता मिल जाता है, लाइट मिल जाती है, और उस लाइट को फॉलो करते करते उस पाथ पे हम चलते हैं, एंड वेल देन लाइफ इज नेवर द सेम अगेन। फिर रास्ता पकड़ में आ जाता है, हमको हमको पता लग जाता है, और हम जो भी सिचुएशन थी हमारी, हम उससे बहुत सक्सेसफुली बाहर निकल पाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। और ऐसे ही आज 3 लोग हमको चूज करना है हमारी जिंदगी में, जो कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमको आए। ठीक है, हो सकता है कि आज ड्राइविंग की वजह से आपका बहुत अच्छे से सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आप उस पर्सन के बारे में सोचो जिसने आपको ड्राइविंग सिखाई थी। हो सकता है कि आपको कोई इलनेस थी जिसकी वजह से आप बहुत टाइम से बेड रिडन थे, और किसी डॉक्टर की वजह से आपकी वो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई, एंड देन ऑफ कोर्स लाइफ इज नॉट बीन द सेम अगेन। इट कुड बी दैट आपको बिजनेस शुरू करना था, बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा, ऑफिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया, उसने आपको रिसोर्सेज दिए, जो भी जगह दी, या फिर आपको पैसे दिए, या फिर कोई आइडिया दिया जिसके ऊपर आपने अपना बिजनेस बिल्ड किया। ठीक है, तो इस तरह के 3 लोग, जब आपको लग रहा था कि कुछ करना था, या कोई हेल्प नहीं थी, या समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी कैसे लीड की जाए, ऐसे में जो 3 लोग आपके हैं उनको आज याद करना है, और उनसे हमको ऐसे मतलब बोल के, एज इफ वो सामने बैठे हुए हैं, उनसे बात करनी है। ऑब्वियसली वो हमारे सामने नहीं है, ठीक है, बट हमको सोचना है कि वो हमारे सामने बैठते हैं, और उनसे हमको बात करनी है, और उनको बताना है कि किस तरह से उन्होंने हमारी जिंदगी बदली, उनको बहुत अच्छे से रीजन के साथ। जैसे रॉन्डा ने एग्जाम्पल भी दिया है, 2 एग्जाम्पल दिए हैं, हमेशा एक वो अपनी जिंदगी से देती हैं, और एक वो वैसे ही देती हैं जिससे लोग रिलेट कर पाए। तो एक उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को क्रेडिट दिया है, बिकॉज ग्रैंड मदर की वजह से उनकी लाइफ में आज की तारीख में ग्रैटिट्यूड इतना ज्यादा आया, बिकॉज ग्रैंड मदर ने उनको सिखाया था कैसे थैंक यू बोलना है, और स्ट्रिक्टली। तो उनको तब लग रहा था कि नहीं, ग्रैंड मदर मुझे सिर्फ ये सिखा रही है हाउ टू बी नाइस टू पीपल, बट शी वॉज नॉट टीचिंग हर टू बी नाइस टू पीपल। वो ग्रैटिट्यूड टू द कोर उनको इम्प्लांट करा रही थी उनकी जिंदगी में। फिर उनका जो पैशन फॉर कुकिंग है, इनफैक्ट रॉन्डा बर्न की मदर ने लाइक अपनी डेथ के पहले, जब उनके फादर की डेथ हुई थी, उसके बाद कुकिंग को एज अ पैशन, एज अ प्रोफेशनल ले लिया था। तो इतना ज्यादा इन लोगों को खाने का और खिलाने का और शौक बहुत ज्यादा था। तो कुकिंग पैशन, वो भी अपनी ग्रैंड मदर को बोल रही हैं वो, कि आपकी वजह से मैंने कुकिंग सीखी, जिसकी वजह से इनका फैमिली प्रोफेशन कुछ टाइम तक बन गया था, जब तक मदर अलाइव थी ऑस्ट्रेलिया में। और फिर उसके बाद हर लव फॉर कंट्री साइड, मतलब उनको बहुत सुंदर, इससे उनको ट्रैवल का बग आया, कि मतलब कंट्री साइड उनको, मतलब बहुत सुंदर शांत जगह, ब्यूटीफुल नेचर, ये सब उनको बहुत पसंद आता है अभी भी। इनफैक्ट इनके ड्रीम गोल में ओरिजिनल में था कि इनको कंट्री साइड पे एक बहुत बड़ा मैंशन बाय द ओशन लेना था, ये उनकी ड्रीम लिस्ट थी रॉन्डा बर्न की, क्योंकि इनको कंट्री साइड में रहना बहुत पसंद था, जहाँ शांति है, जहाँ ब्यूटीफुल व्यूज हैं, स्टनिंग व्यूज एंड द नेचर। सो ये तीनों का क्रेडिट अपनी ग्रैंड मदर को देती हैं, कि आपकी वजह से मुझे इन सारी चीजों से प्यार हुआ, जिसके और मैंने अपनी जिंदगी में वो बहुत इनको अवेल करती हैं रॉन्डा बर्न ने, अब जैसे जिस तरह बताया है। फिर एक और एग्जाम्पल है इसमें, जो ये पर्सन है, तो जो भी पर्सन है उसने सारा को एड्रेस किया और कहा कि सारा, जब उस दिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, या मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी ये डिसीजन लेने की कि मुझे अपना करियर परस्यू करने के लिए अपनी कंट्री को छोड़ के फ्रांस जाना पड़ेगा, तो तुमने मुझको सहारा दिया, और तुमने बोला कि कम ऑन जस्ट गो, डोंट थिंक अबाउट इट, और मैंने तुम्हारे डिसीजन पे काम लिया, और मैं फ्रांस आ गया, और वहां पे मैंने एज एन अप्रेंटिस, लाइक एज अ ट्रेनर, मैंने स्टार्टिंग किया अपने करियर का। उसके बाद आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ अपने करियर में, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से सारा। अगर तुमने उस दिन मुझे लाइक पुश नहीं किया होता, तो शायद मैं ये डिसीजन नहीं लेता कि इस कंट्री में आके एक नया करियर शुरू करता। सो थैंक यू सारा फॉर एवरीथिंग दैट यू डिड फॉर मी, है ना। इस तरह ये 2 एग्जाम्पल दिए मैं, तो इस तरह हमको भी रीजन बता बता के सोचना है कि किस तरह उस पर्सन ने, पहले तो सोचना पड़ेगा बचपन से लेके अभी तक, गोइंग डाउन द मेमोरी लेन। हम लोग, कई लोग 40s 50s 60s 70s में भी हैं,
तो हमको जाना पड़ेगा पीछे, रिफ्लेक्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा वो मोमेंट था जिसमें समवन वेंट आउट ऑफ द वे और किसी ने हमारे लाइफ का कोर्स डिसाइड किया, हमारी मदद की, जो भी किया, है ना। सो ये दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू सिट एंड थिंक अबाउट एंड ड्वेल। वैसे हम पास्ट में जाने को मना करते हैं, लेकिन जब ग्रैटिट्यूड करने की बारी आती है तो हम पास में जाके डिग कर करके निकालते हैं नगेट्स ऑफ गोल्ड की, एक और निकला, अच्छा एक और निकला। ऐसे अपना वो बैग बास्केट भर लो नगेट्स निकाल निकाल के पास्ट में से, क्योंकि पास्ट में जाने का हमेशा मतलब होता है कि कुछ नेगेटिव चीज ख्याल में आ रही है। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, जो बिकॉज कोई ऐसी मेमोरीज जो होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं होती है, वो बहुत जल्दी इम्प्लांट हो जाती है, तो पास्ट में जाके वो एनग्रेव हो जाती है हमारी जिंदगी में। तो जब भी हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें वो याद आती है कि हाँ उसने हमको ऐसे कह दिया था, उसमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, फिर इस तरह रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है आज नहीं है लेकिन तब तो थी ना। तो इस तरह से हम लोग पास में से हमेशा नेगेटिव चीजें उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज का जो दिन है उसमें हम पास में से बहुत सुंदर गोल्डन 3 नगेट्स निकालेंगे, बड़े बड़े गोल्ड के पीसेस, in form of people who have been there for us whenever we've needed them the most. और इस तरह से even if it is driving or anything as I mentioned, like क्योंकि बहुत जरूरी होता है to be independently being driving your own car, so that's so important to always be या फिर जैसे हमने एग्जाम्पल्स बताया उनमें से कोई भी किसी भी तरह से, मेरा तो मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे तो दूसरी जिंदगी देने वाली डॉक्टर नरेंद्र बट्टा है, अगर आप लोग जानते हो, शी इज अ गायनिकोलॉजिस्ट एंड शी ओन्स अ हॉस्पिटल इन दिल्ली। वेरी ओल्ड लेडी नाउ, आई मीन लाइक जब मेरे साथ तो बिल्कुल ही had मेरे my I had lost my life and my breath and everything, so I had passed away and then she brought me to life at 1:30 a.m. इतनी सीनियर डॉक्टर, हॉस्पिटल की ओनर, उनको बिल्कुल आने की जरूरत नहीं थी उस टाइम, है ना। शी कुड हैव टोल्ड हर असिस्टेंट्स कि ठीक है कर दो, बट मेरी जिंदगी का मिशन बहुत बड़ा था, बहुत बड़े बड़े काम, अच्छे अच्छे काम करने थे, तो वापस भगवान ने मुझे जिंदगी दी और वो आई 1:30 बजे। बहुत मतलब वो 20 पल्स में उन्होंने वो किया था मेरा सर्जरी, एंड इट जस्ट लाइफ इज नॉट द सेम अगैन। 10 दिन तो मुझे होश ही नहीं था, उसके बाद आई वॉज इन द आईसीयू, बट उसके बाद फिर वेल होश आया और फिर द सेम अगैन। तो इसीलिए मैं अपनी लाइफ को बहुत रिवेयर करती हूँ, बिकॉज जब चली जाती है आपकी जिंदगी और फिर जब वापस आती है, और वो भी उन्होंने जब मेरी 20 पल्स में जब सर्जरी किया था तो उन्होंने सबसे लिखवा लिया था, क्योंकि कोई चांस नहीं था सरवाइव होने का या सर्जरी सक्सेसफुल होने का, कोई चांस नहीं था उस हार्ट बीट में, क्योंकि हार्ट बीट लगातार पल्स गिर रही थी। पहले तो 20 मिनट पल्स ही नहीं थी, फिर वो पल्स आई जैसे तैसे इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह जो करते हैं ना, उससे तो मेरी पल्स आई दोबारा से, ठीक है। फिर उसमें उन्होंने फिर कहा कि चलो मतलब दिल थोड़ा सा धड़कना शुरू हो गया है तो अब मौका वेल करके सर्जरी कर दो, तो कोई वो नहीं था, तो इन लोगों ने सबने लिख के दे दिया था, घर वालों ने, माय मम इन लॉ एंड दैट ठीक है कर दो सर्जरी, ऐसे भी तो वो अलाइव नहीं है, वैसे भी नहीं है, वैसे भी पता नहीं होगी नहीं होगी, बट या आई मीन लाइक सो लेटर ऑन जब डॉक्टर भट्टा से बात करते तो बहुत बुजुर्ग इंसान है वो, एंड देन शी सेज दैट मेरी लाइफ की सबसे क्रूशियल सर्जरी वो थी जब मुझे ही नहीं पता था। एंड माय मम इन लॉ आल्सो सेज दैट मैंने कभी डॉक्टर भट्टा को इतना मतलब टेंशन में नहीं देखा है जितना, बिल्कुल कहती है वो ऐसे खड़ी हुई थी बिल्कुल एज इफ बिकॉज she was with me for many number of years before. So इस तरह से अगर हम सोचने बैठे हैं तो हमको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी मतलब बिल्कुल लिटरली भगवान का रूप लेके आते हैं, एंड देव बिन देयर विद अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कभी कभी हम बहुत लोनली होते हैं या कुछ होते हैं, एंड सडनली ऐसा लगता है कि समवन कम्स लाइक अ फ्रेंड, लाइक मे बी अ कोवर्कर एट ऑफिस, एंड जस्ट हेल्प्स अस थ्रू, लिसन्स टू अस, और उसके बाद हमारा दिल का हल्का हो जाता है और वो करेज देते हैं कि कम ऑन गेट अप एंड मूव ऑन, इस तरह से। सो दीज आर द पीपल हु आर लाइक रियल पीपल हु आर गॉड सेंट इन आवर लाइफ एंड वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम। सो या आज बचपन से लेके अभी तक देखते हैं, कई बार पेरेंट्स, मेरी तो एक मॉम ही है, लाइक आफ्टर माई फादर पास्ड अवे, so in between also he had just disappeared or something, I don't know what, like yeah, but then she's been there and always been a homemaker, but then she took up a job and she raised the three of us so well,
all three of us, Rashmi, me, and Neeru. I mean, like, we are so well placed, so super successful at our careers, very highly educated. When everyone said that take them to the village, बेटियों की शादी करनी होती है, and she took a stand and she said that no, no matter what it takes, out of me, I'm going to educate them. And she sent us to the best schools, the best universities. So of course schools were private, but all of us have gone to the best government universities. We were so good at studying, and here we are, the younger one's a doctor, and I'm here, and Minnie of course comes in our Rashmi comes in our sessions, and she's a Canadian resident now. She barely comes to India. So, but then she has a very good profile and position in her organization and is doing so well in her career. Okay, so this is how it is. So इस तरह से सोच के उन लोगों के लिए, तो अभी तक हमको ये तो पता था कि वो लोग हमारी जिंदगी में बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंटल रोल थे उनके, टू टेक अस फॉरवर्ड, टू गिव अस दैट लाइट, लेकिन हमने उस डेप्थ में सोच के उनको थैंक यू नहीं बोला, है ना। उनको इस तरह से पता तो था कि हाँ सबकी मम्मियाँ बहुत ज्यादा करती हैं, लेकिन क्या हमने एक जगह बैठ के सारी वो चीजें सोची जो हमारी मम्मियों ने हमारे लिए की है ना। इट इज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस। सो वी नो दैट माई मम्स बीन वेरी नाइस। जैसे अगर कब आप मुझसे बात करोगे तो आप डेफिनेटली बताओगे, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे कभी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो मुझे जगा देती थी, मेरी मम्मी स्वेटर बुन के मुझे पहनाती थी, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्वेटर, मेरी मम्मी ने ये किया, या मेरी मम्मी, हम सबको मालूम है। और हम एक दूसरे से मिलते हैं तो शायद बात करेंगे कि मेरे डैड ने ये किया मेरे लिए, मेरे डैड बहुत मेहनत करते थे। और लेकिन हम कभी भी ऐसे अकेले में बैठ के हमने इस तरह से सोचा नहीं है कि हम उनको कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड दें फॉर व्हाट दे हैव डन। और उनको हमारे सामने होने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही टाइम निकाल के मे बी 5 मिनट 10 मिनट का सारी वो चीजें गोइंग डाउन द मेमोरी लेन से लेके आज बैठ के सोचेंगे और थैंक यू बोलेंगे उनको उस चीज के लिए। उनको हमारे सामने तो होना नहीं है ना। और कई लोगों के पेरेंट्स हैं सामने, कई लोगों के नहीं है इस दुनिया में पेरेंट्स, है ना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली प्रैक्टिस में ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनको दे आर अलाइव और दे हैव टेकन अ ट्रांजिशन, ऐसा कोई रूल नहीं है आज की प्रैक्टिस में। अगर वो कोई ऐसा इंसान है जिसने आपका बहुत सहारा जो बने हैं, और अगर वो अभी इस दुनिया में नहीं है, डजेंट मैटर, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिससे जहां पे भी वो दुनिया में है, अगर उन्होंने दूसरा जन्म भी ले लिया है, आपकी प्रेयर्स, आपकी ग्रैटिट्यूड उन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, दिस इज द वंडरफुल पार्ट अबाउट यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स ने ही लिया, यूनिवर्स ने ही उनको क्रिएट कर दिया है दूसरी बॉडी देके, है ना। सो ये एनर्जी डेफिनेटली जाएगी उनकी जिंदगी में, और जहां पे भी वो वहां है उन तक पहुंच जाएगी। हमको इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, हमको बस ये सोचना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, दिस इज नॉट आवर फॉर्टे, इट इज नॉट आवर जॉब। And so yeah, this is what we need to kind of do this as a practice। और किसी भी तरीके से सोचना पड़ेगा पहले कौन से 3 है। तो अभी तो मुझे बहुत सारे लोग याद आ रहे हैं, लेकिन वेल लाइक 3 लोगों का हम आज कर लेते हैं, हम 3 लोगों का कल कर लेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, who have helped us in shaping our career। I think my elder sister Rashmi, I don't know whether she's here or not, she's also been instrumental in shaping my career, because when I got into my MBBS everything happened, okay, and then my parents were always like, पहले होता था ना बस डॉक्टर इंजीनियर है वकील ही बनना होता है, and then she was like, that my parents were always like, she's so intelligent and she should go into medicine and this and that, and but then like I was not that interested। And then my sister was doing her graduation that time in the same subject that I have, so like she had already done, हमारे time 4 साल का graduation होता था, so my elder sister had done, and she would tell me stories about the college and this is what we do, and it looks so much fun। So I left everything and I told her that I want to get into the same college and do the same thing, and that's how
I got into the same college, and that's my so much like, मैं सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब दुनिया में नाम हो रहा है मेरा इस फील्ड की वजह से, which is because of my sister, because she did a graduation. Of course, उसने masters किसी और में की थी. She did in social welfare, and then she did a labor law, and then she did her MBA and all of that. तो उसका stream change हो गया था graduation के बाद. But I deep dived into nutrition, healthcare, and that's become my vocation today. And it's actually because of her, because of all the stories that she was telling, and she was so supportive always. Most more because mummy was always away at work, so she was like my mom, and ironing my school dress to like whenever I had to go for a party, she would give me, like, you wear this and you do this, and polishing my shoes, and like all of that my elder sister has been doing for me. So when she got married for 2 years, it was so cathartic. I didn't even know that how to lead my life. जब उसकी मुझसे 2 साल पहले शादी हुई थी. So, and then, like it's been like this. So many people who are coming to my mind as I'm talking about this, वो छोटी छोटी चीजें जो किसी ने की है, it was like really amazing. So yeah, I mean, like, think about all those people जिनसे हमको help मिली, support मिला या guidance मिला, ठीक है, from other people, and when we needed it the most, है ना. और उसके बाद से that person alters the course of our life. There is a huge shift जो हमारी जिंदगी में आ जाता है. चाहे हमारा थोड़ा बहुत वो लो मोमेंट कुछ टाइम चलता है, लेकिन हमको वो धक्का मिल गया है. समटाइम्स यू नीड जस्ट दैट वन फिंगर पुश. यू ऑलरेडी नो, जैसे कई बार होता है ना, सो मेनी ऑफ अस हु बीन ट्राइंग टू जॉइन अ जिम और गो फॉर अ वर्कआउट, एंड बहुत ऐसे लगता है, आलस आता है ना कि ठंड बहुत हो रही है, कोजी कोजी बेड से निकलना, वार्म हाउस में से बाहर जाना, लेकिन हमको बस वो एक वन फिंगर पुश चाहिए होता है. बट एक जना कोई बोल दे कि कम ऑन जस्ट डू इट. It is like that. Like I had been going to the gym, and Sunita और मैं बहुत ज्यादा मिलते नहीं है. We are next door neighbors, but ऐसे मिलना बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है. Because she has a different work hours, I have a different work hours, and whichever way. And then she socializes too much. Like, I'm 0.00001% of her socializing. So it's like, kabhi wo available hai, kabhi nahi hai. So I go for my workouts, my running, whether no matter, barf pad rahi hai, pani gir raha hai, आंधी तूफान आ रहा है, I don't miss that. So वो करते करते then like, but she was struggling with her weight and health and all of that, and like try अपनी तरफ से वही बेचारी बहुत कोशिश करती है, but नहीं हो पा रहा था. And one fine day when she met me, and we were just I told her that, I don't know where we met, I think we met on the road or something, and then we said that, okay, let's go for a nice walk. We have a beautiful walking area in our apartments. So, and this is 1.1 kilometer, one walking area. So बहुत अच्छे से वो भी हो जाता है. Then I told her while walking only, I told her that चल अब हो गया, and I have a stipulated time, let me go to the gym. तो कहती है अच्छा तो जिम जाती है. मैंने कहा हाँ काफी टाइम से जा रही हूँ. तो then she said अच्छा चल मैं भी चलती हूँ. And that very day I told her that please pay the money today only, so that you become consistent. नहीं तो फिर वो अगले दिन से आएगी नहीं. And I was seeing that she was struggling with her weight and all that. And so, that it was just that one. So that drive to be fit was already there in her. It's just that she needed that one finger push, that happened that time. And I think this is the reason why वो उस दिन मुझे बहुत थोड़ी सी देर के लिए मिली थी. And then what? Since now she's constantly gymming and working out, and it feels so good, in these winters when everybody's eating, to actually just be drinking hot beverages and to, work out well, and then get that warmth inside. So that is how it is. So छोटी छोटी चीजें भी हमारी जिंदगी में एक दूसरे की वजह से होती है, because human beings are so, like, they're so social animals. They get affected by each other. They encourage each other. They make each other's life better. जो हमने कल पढ़ा था हीरो बुक में भी कि like उनका काम था कि हम किसी और की जिंदगी में कैसे डिफरेंस ला सकते हैं. तो एनेस्थीसिया सॉरे और मास्टन केप और पॉल और फेलिया, इन सब का यही थॉट प्रोसेस था.
दैट ठीक है, मेरी जिंदगी में तो माई कप इज फुल नाउ, आई हैव enjoyed, I'm enjoying the best of life, I have all the resources, I have so much money, I have success, I have fame, I have health, I have everything. Now what next is that मुझे लोगों की जिंदगी में डिफरेंस लेके आना है, मैंने जो इतना एक्यूमुलेट किया उसकी वजह से। तो सारे की सारों का कल यही था ना कि मैं दूसरों की जिंदगी में कैसे डिफरेंस लेके आऊं। So that is what they have been thinking, and after they have had their share of success, so ये वाली चीज जो है, तो ये बहुत जरूरी होती है कि सर्विस टू पीपल। So human beings are always meant to channelize what they have to someone else. This is their only job, you know. So हम सब tools हैं। So कहते हैं ना, टोनी रॉबिन्स का कोट है ये, सौम्या मेरा नहीं है, that we are vehicles of universal orchestration. Okay, so we are just vehicles. People are sitting in this vehicle. Vehicle does not keep moving. Vehicle लोगों की वजह से चलती है। किसी ने पेट्रोल भरा है इसलिए चलती है, कोई ट्रांसपोर्ट करके पेट्रोल लेके आया इसलिए चलती है। व्हीकल यूजलेसली कहीं नहीं जाती है बिना बात के एक जगह से दूसरी जगह। तो हम बस व्हीकल्स हैं, हम वो चैनल हैं ऑफ द यूनिवर्सल ऑर्केस्ट्रेशन। अब उस चैनल से कितनी जिंदगियां आपको टच करनी है अपने तरीके से, जरूरी नहीं है। अगर कोई बैंक में अकाउंटेंट है या बैंक में क्लर्क है, तो वो भी तो अपना डिलिजेंस लेके आ रहा है ना अपने काम में। और कितने लोगों का काम हो पा रहा है ना, पूरे बैंक का मतलब अकाउंट्स अच्छे से संभाल रखा है, डिलीजेंटली, ऑनेस्टली, सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो अभी तो आप लोगों के लिए कर रहे हो ना, ठीक है आपको सैलरी मिल रही है उस बात की, लेकिन काम तो आप बहुत इजी कर रहे हो बहुत सारे लोगों का, बाय मेंटेनिंग अ ब्यूटीफुल रिकॉर्ड इन अकाउंट्स। And that is the beauty of it, that as a human we are all channels in our own way to serve others, है ना। So हमारी जिंदगी में भी तो उनकी वजह से ही हम आज जो हैं वो हैं, है ना। हमारे पेरेंट्स ने हमको इतने अच्छे से पला बढ़ा के इतना केपेबल बनाया है। जो कल बोल रही थी ना एनेस्थीसिया, कि मेरी मदर ने जिंदगी भर, हम लोग के पास तो पैसे नहीं थे तो इतना स्ट्रगल कर करके लाइक पैसे कमाए। और फिर उसके बाद वो रोंडा बर्न ने बताया था अपनी मदर के बारे में, तो हम जब प्राइस टैग देखती थी, ये खरीदना है ये नहीं खरीदना है, क्योंकि पैसे की कमी होती थी। और कहती हैं कि फाइनली वो दिन आ गया जब मेरी सीक्रेट मूवी रिलीज हुई 2004 में, और मैं अपनी मम्मी को शॉपिंग कराने लेके गई और उन्होंने अभी उसे अपने लिए तलाक सामान हटाना लिया। है, नाक दिलवा देते हैं। तो उन्होंने अपने लिए सामान खरीदा और उन्होंने प्राइस टैग भी नहीं देखा, और वो बहुत एक्सपेंसिव चीज थी। तो कहती है मुझे वो उनके चेहरे पे स्माइल देख के बहुत अच्छा लग रहा था, दैट लाइक इतना ब्यूटीफुल उन्होंने, मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था वो रोंडा बर्न के दिन के लिए, कि उनकी मम्मी अपनी फेवरेट चीज पिक कर पाई बिना उसका प्राइस टैग देखे हुए। सो दिस वाज अ ह्यूज, एंड शी सेड दैट उन्होंने जो मेरे लिए किया था वो कुछ भी नहीं है उस गिफ्ट, जो गिफ्ट मैंने उनको दी, जो उन्होंने शॉपिंग करी उस दिन, उसके वो कुछ भी नहीं थी जो उन्होंने मेहनत की। वो कुछ नहीं थी उस गिफ्ट के सामने जो मैंने दी। उन्होंने बहुत कुछ किया था, बट येस आई कुड नाउ मेक अ डिफरेंस टू हर। और फाइनली मैं अपनी मम्मी को ऐसा दिन दिखा पाई जब वो शॉपिंग करती हैं बिना बिना प्राइस टैग्स देखे हुए। So it's a big thing, So that's how we are all channels to serve people. And we have been receiving a lot too, So today is a day when we have to acknowledge, we have to sit, we have to think, we have to acknowledge, and then we have to do gratitude for those three people. और ये भी आज रोंडा बर्न ने इसमें बताया हुआ है that तीनों का इकट्ठे करना है। ऐसा नहीं है कि एक अभी कर लिया, एक 15 मिनट के बाद कर लिया, एक दोपहर को कर लिया, ऐसे नहीं, तीनों का इकट्ठे करना है। एक जगह बैठना है, ऐसे सोचना है कि वो पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, और फिर उसको उन पर्सन से बात करनी है आपको कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे वो आपके लाइफ में डिफरेंस लेके आए, और फिर आप दिल से उनको दिल पे हाथ रख के थैंक यू बोलना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा इंसान जो आपकी लिस्ट में जो सेकंड पर्सन है, आप उससे बात करना एज इफ दैट पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एंड देन बहुत डिटेल में इसमें लिखा हुआ है दैट जितनी डिटेल में आप वो चीजें सोच सकते हो उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया, उनको कितनी मुश्किलें आई होंगी वो करने के लिए, उतना, और फिर भी उन्होंने वो आपके लिए किया। फिर उसके बाद दिल से थैंक यू, और फिर तीसरा इंसान लेके उनके सामने। और उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसा मौका नहीं मिलता कि पूरे दिन भर, मतलब आप बोल के नहीं कर पा रहे हो, उस तरह का टाइम नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, आप लिख के भी कर सकते हो, बट लिख के करना सेकेंडरी ऑप्शन दिया हुआ है। प्राइमरी इज ऐसे बोल के करना आउट लाउड,
मन की प्रैक्टिस नहीं है ये, मन में करने की, या तो बोल के करनी है या लिख के करनी है, ठीक है, मन में सोच के नहीं करनी है। तो बोल के करनी है, अगर बोल के नहीं कर पाते हैं तीनों का साथ में इकट्ठे, तो फिर लिख के करनी है। और लिखना ऐसे जैसे कोई आप उनको चिट्ठी लिख रहे हो, उस तरह से, डियर सो एंड सो, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू केम इनटू माय लाइफ इन दैट ईयर व्हेन आई नीडेड यू एंड देन यू डिड दिस फॉर मी, आई एम सो ग्रेटफुल, उसके बाद आपने ये भी किया, ऐसे लिख के। सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। एंड इसमें लिखा हुआ है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस अगर आप डिलिजेंटली करेंगे ना, तो आप देखना कि जिंदगी में आप कभी अकेले नहीं रहोगे, और हमेशा जब आपको जरूरत होगी कोई ना कोई अपीयर हो जाएगा फ्रॉम नोवेयर टू हेल्प यू, बिकॉज आपने एक्नॉलेज किया है उन लोगों को, जो है। सो दैट्स व्हाट यू से। इसमें लिखा हुआ है एंड जितना आप बोलो उतना ही कम है, एंड यू कांट से टू मच का मतलब होता है जितना बोलो उतना ही कम है। इंस्टेड जितना ज्यादा आप बोलते हो, जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, उतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और इस प्रैक्टिस को करने के बाद यू विल सी दैट जादू जादू का विस्फोट हो रहा है आपकी जिंदगी में, मैजिक एक्सप्लोड इन योर लाइफ, ये लिखा हुआ है। तो जैसे जादू का विस्फोट हो रहा है आपकी जिंदगी में, यू विल बी सराउंडेड बाय मैजिक। आई होप हम सब वो एफर्मेशन कर रहे हैं, माई लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स, प्लीज कीप डूइंग इट। ठीक है, जब अच्छे जोन में हो तो फटाफट ग्रैटिट्यूड जर्नल में एफर्मेशंस किया करो, है ना। जैसे मैंने बताया था, मिल्क द मोमेंट्स व्हेन यू आर एट पीस एंड व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप खुशी के फीलिंग में होते हो, उस फेज में, या ऐसे मतलब गुड फीलिंग जोन में होते हो, उस मोमेंट को कैप्चर करो और उस मोमेंट में आप अपने एफर्मेशन करो। बिकॉज अच्छे मोमेंट्स में जब आप अबव द लाइन हो, उस वक्त जो एफर्मेशन करते हो वो बहुत जल्दी आप अपनी जिंदगी में देखते हो उनको होता हुआ। So that is how it is, and that it says that it numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. मतलब ये जो प्रैक्टिस है ये सबसे पावरफुल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड है जो आप कर सकते हो, इस पूरी किताब में ये लिखा हुआ है। एंड दैट्स इट, एंड पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस हमारी दिन भर में किसी भी टाइम करने वाली प्रैक्टिस है। जब आपके पास इतनी फुर्सत है कि आप तीनों का इकट्ठे बैठ के सोच सोच के कुरेद कुरेद के बोल पाओ, तीनों का इकट्ठे, डजंट हैव टू बी वन आफ्टर द अदर, मतलब वन एंड देन लेटर एक और एक और, तीनों का जब भी ऐसा टाइम हो जब आपके पास 15-20 मिनट्स है, तब आप इकट्ठे तीनों का कर लेना, सुबह दोपहर शाम को जब भी। एंड सुबह काउंट माई ब्लेसिंग्स वेयर यू हैव टू राइट डाउन 10 ब्लेसिंग्स, उनको रीड करके 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना। और आज find a quiet place alone sometime during today, quiet place, and make a list of 3 people who made a difference in your life। और फिर एक एक करके उनसे आउट लाउड बात करनी है, मन में नहीं करनी है ये प्रैक्टिस, आउट लाउड बात करनी है और रीजंस बताने आप क्यों ग्रेटफुल हो और किस तरह से उन्होंने आपकी जिंदगी बदली या किस तरह वो डिफरेंस लेके आया आपकी जिंदगी में। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस। सो मैजिक रॉक प्रैक्टिस हाथ में पत्थर पकड़ के पूरे दिन भर में सोचो क्या क्या अच्छा हुआ और उसमें से बेस्ट चीज निकालो और उसको उसको सोचते हुए, एंड देन यू कैन जस्ट स्लीप। या दैट्स अबाउट दिस प्रैक्टिस। फिर कल का ब्यूटीफुल डे है जब अपनी ड्रीम लिस्ट पे काम करेंगे। Then we go to the other book. So there's someone called Gunjan who's reading for us. I've also not read your name or heard your name in the group. So we have another debut. I don't know. Priya, is Gunjan there in the session? No, ma'am, doesn't look like. Okay. Gunjan Adya, if you are there in the session, can. With some other name, because कई लोग Samsung Pro होते हैं, कई लोग iPhone something. Yeah. Any iPhones or Samsungs or Vivos who would like to, I mean, who's Or anyone Gunjan? might have put their daughter's name in place of Yeah, them. ऐसे भी हो daughters, सकता है. sons. Yeah. Okay, never mind. Anyone who wants to read, who's not. Can I? हाँ विजय जी बिल्कुल. Yeah. Yeah, it's okay, right? Yes, sir. Absolutely, ma'am. Absolutely. हाँ. Even I was Yes. thinking of Vijay sir's name. हाँ. Okay. You could have Thank wanted you. anything today. Yeah. Yeah. Peter Foyo. Some people say, why do you still work? And I say, because I am making a difference and I would like to continue to do that while I'm here.
दिस इज द काइंड ऑफ पैशन एंड जॉय जो हमारा काम हमको देता है, जो हमको फील करना चाहिए. कई लोग काम को बहुत बर्डन की तरह लेते हैं. जब तक बर्डन की तरह काम लेंगे तब तक हमारी लाइफ में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा और बाहर की दुनिया में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा. अपने काम में से ग्रैटिट्यूड निकालो. लाइफ सस्टेन हुई ना इतने महीनों से, सैलरी मिल रही थी इसीलिए सस्टेन हुई, या वो जो बिजनेस था उसमें एक एक जना, चाहे उसने कम पैसे दिए, ठीक है, चाहे उसने 12 महीने में से सिर्फ 10 महीने पेमेंट्स की हो, 2 महीने नहीं की हो, डजेंट मैटर. जो पैसे दिए हैं उसके लिए थैंक यू. अपने काम के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप एंगेज रहे क्रिएटिवली, उसके लिए थैंक यू. लाइक अपने काम में से ग्रैटिट्यूड निकालना. इफ यू हैव नॉट बिन लाइकिंग योर वर्क सो मच और यू डिड नॉट हैव अ पैशन फॉर इट, बिकॉज जब तक हम करेंट वोकेशन के साथ वी डोंट स्टार्ट लविंग इट, तब तक हमारा अगला दरवाजा नहीं खुलेगा. इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग फर्दर इन योर लाइफ प्रोफेशनली, okay, first you have to give your 200% in your current vocation. चाहे वो बिजनेस हो, चाहे काम हो, चाहे आपको पसंद हो. ये हमने वर्क्स लाइक मैजिक चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, that you have to love your job and be excited about starting your work day every day without fail, because सब कुछ future success starts from there, which is exactly what Peter Foy is trying to tell us, that this that kind of a passion and joy. So people would ask him, why are you still working? And then he would say that because I'm making a difference and I like to do what I'm doing right now, that way. Yes. Yeah, next topic, we're starting a fresh topic, Vijay ji. Hanji. Working for the joy of it. There's no better feeling in the world than to have found your dream and be living it. To work for the sheer joy of it, to wake up and be really excited on a Monday, to love what you do so much that the idea of a long vacation seems boring, that is living. Oh my God, that is asking for too much from us. So it's ये तो समझ में आता है that अपने work में खूब joy derive करो. ये भी समझ में आता है wake up and be excited even on a Monday. So हाँ, I have reached this level that I'm very excited. There's something called Monday blues. Okay, but there's nothing like Monday blues. In fact, हम सबके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बहुत लंबी छुट्टी मिल जाती है, मतलब घर में ही अगर है और 3-4 दिनों का लॉन्ग वीकेंड है, आप घर में ही बैठे हो, तो आप बोर हो जाते हो. यू स्टार्ट मिसिंग वर्किंग और गोइंग टू ऑफिस और समथिंग, इजंट इट? दैट मीन्स यू लव योर जॉब, यू लव वर्किंग, एंड दैट वे. So yeah, there's nothing like Monday blues. In fact, Monday is a fresh start. So I've told every day, tell yourself, ingrain it. Sunday is a fun day. Monday is an even more fun day. Tuesday, oh, it is the best day. It is like that. So every day when you say that this is a fun day, Monday is a fun day. Aaj Tuesday hai, so Tuesday is a fun day. It's a super fun day. Okay, so that is how we have to kind of ingrain that so that we can. But इसमें लग रहा है इन्होंने लिखा हुआ है रॉनबर्न ने कि आप अपने काम से, जो भी आपका काम है, उसे इतना ज्यादा प्यार करो कि आपको लॉन्ग वेकेशन का आइडिया भी उसके सामने फीका लगे. मतलब यू थिंक दैट ओ लॉन्ग वेकेशन है, मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लॉन्ग वेकेशन का आइडिया भी इतना एक्साइट नहीं कर रहा. That is living. So you enjoy that vacation also, but yeah, I mean, like, enjoy your work as much. Acha. Yeah. Peter Burwash. Back in the late 70s, early 80s, I lived in Hawaii. At 6 o'clock in the morning, I'm on the elevator. I've got a 6:30 tennis lesson and I'm looking around and I'm thinking, these poor people have to go to work at this hour. I just never really felt like I have gone to a job or done any work at all. Yeah, so this is what Peter Burwash has to say, that I've got a 6:30 tennis lesson. I'm looking around and I'm thinking these poor people have to go to work at this hour. But अपने काम से इतना प्यार करो कि क्या 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे. It should not matter to us because you have to be madly in love with your work that you're doing. That way. John Paul DeJoria. I love what I do. I look forward to going to my office. I look forward to seeing people I work with.
I chose this way of life and it's good. It's a good one. Yeah, definitely. This is again deriving joy out of your out of your vocation. So I also feel I'm always excited about starting my work day. I mean, yesterday I was given a work from home because of Ram Mandir, and because वो I think कुछ government ने holiday declare किया था, but it was not a छुट्टी, it was a proper work from home. And all I was so looking, I exactly logged in at 10 o'clock, and then ऑफ कोर्स लाइक आज मेरा पेड वेबिनार है तो उसकी पीपीटी बनानी थी एंड ऑल ऑफ दैट, सो बहुत एक्साइटेडली आई डिड दैट. एक तो होता है ना कि घर पे बैठे हो तो आप सोचो कि अरे शॉपिंग करने चले जाओ, ये कर लो, आफ्टरनून नैप ले लो. I did not. I started my work and ended even after 6 o'clock, way after 6 o'clock. So this is the kind of passion that there was no one watching. I was alone in the house. There was no one. Kushal was also working. He was working in his room, and he was also onto something. कोई किसी project पे है जो उसको Wednesday को deliver करना है. So he was also working from home only, and कोई नहीं था मुझे देखने वाला है ना. I was alone. I could have just watched a movie. Who was there to check? बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली, आपको अपनी तो आंखों को अपनी आंखों में तो देखना है ना मिरर में एट द एंड ऑफ द डे. सो अपने साथ तो कंपनी के साथ चीटिंग करेंगे टाइम का. यू गेटिंग अ फैट सैलरी फॉर दैट वन डे एंड देन चीटिंग विद द कंपनी जस्ट बिकॉज दे हैव गिवन यू द फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम होम. सो इट इज वेयर डिलिजेंस गेट चेक्ड. सो कहते हैं ना कि यूनिवर्स के दरबार में you are answerable for every little act that you do. So this is how it is. Like it is so much fun. I gave my best in making that presentation. अभी भी बची हुई है वो बनानी. अभी जाके बनाएंगे हम. Pete Carroll. I would love to do what I am doing whether I was getting paid or not. It's interesting that most of our players say the same thing. It's great that we are professional and we get paid well to do this, but we would do it anyway. You are fortunate to have the opportunity to feel that way about what you do. प्रोफेशन को सैलरी के साथ कंपेयर करना है ना कि इतने में इतना ही काम होता है, दैट इज द वर्स्ट थिंग जो हमारी आगे की ग्रोथ को वैसे भी स्टैग्नेट कर देगा. कभी भी डोंट इक्वेट योर वर्क टू द मनी दैट यू हैव. Always give your 200% because in the realm of like universe, in the invisible realm, जो आप effort करते हो, not equating it to money or anything, will bring amazing miraculous rewards in life. कुछ चीजें होती हैं जो किसी को दिखाने के लिए नहीं होती है, वो सब अपने अंदर होती हैं. सो हमको ये पता होता है कि हैव आई डन माई 200%, कि मैंने शॉर्टकट लिया है इसको करने का. हैव आई गिवन माई बेस्ट टू इट? Have I? So that's very important. अपने आप से क्वेश्चन करो, किसी और से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. Have you been the best version of yourself when it comes to any act, or you have been full of complaints? So check yourself. That is what it is. So yeah, I mean, like they say that Pete Carroll, that we are fortunate to have the opportunity to feel that way about what you do, that yeah, whatever the payments are coming, the money is coming because of certain vocation. How much नहीं सोचना होता है पूरे टाइम. हाँ जी. Michael Acton Smith. A lot of people say, if I made money, if I was successful in business, I would retire at age 30. I just so rarely happens. It just rarely so happen. No, sorry. It just so rarely happens because the people who have that drive and that big dream and vision to build something amazing are not the sort of people who just want to put their feet up and retire. I was offered a lot of money to sell this secret film, and at the time I was in colossal debt with so visible way to release it to the With world. no visible way. No visible way. No visible way to release it to the world. But to sell my dream
was inconceivable to me. It would be like selling my greatest joy and reason for living, and there is no amount of money that can ever buy that. Yeah, so both of them have kind of really appreciated their job. They say कि कई बार ऐसा लगता है कि बस मेरा तो मैं काम शुरू करूं, बस 10 साल में मैं इसको सक्सेस स्टोरी बना लूं, उसके बाद I'll retire and I'll have fun. But by the time आप उस मुकाम पे पहुंचते हो जहां आपको लगता है कि you want to retire, you want to do so much more because आपका mindset and thought process change हो चुका होता है. Then you want to do more for the others. You want to expand your business क्योंकि आपको अपने काम से बहुत प्यार होने लग जाता है. That's what it is, that's for business. But even if people who are employees, like I'm an employee of the company, I'm always thinking about how more can I enrich. And like Sunita would tell you that I always had very specific prayers about my organization. In fact, Meena had asked me to write that yellow card, and I told my 3 goals, usme se mera third goal hi hai to take my company to that level. It has never gone before, because of my prayers, because of my thoughts, because of my ideas, because of my actions. I would still continue to get the same salary, isn't it? I mean, my salary doesn't increase when I give an idea, I act on an idea, या मैं कुछ नया create कर रही हूँ, या मैं 2 नई किताबें लिख रही हूँ, courses launch कर रही हूँ, मुझे तो same salary मिलेगी ना. क्या फर्क पड़ने वाला है? तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं बहुत बड़े बड़े dreams करूँ? But every day without fail, in my daily gratitude, I have my vocation. That I have a certain target I have set to myself to take my company to that level where there are so many employees. I mean, like one of Asia's biggest corporate, it is so many employees all over the globe. But, like I think my gratitude to my company itself will take it to the heights that it's never gone before. And, so this is whether I whatever it is, like जो भी reward punishment, जो भी work की वजह से हम लोगों की जिंदगी में आते रहते हैं, but then irrespective, and from day one, I think सुनीता जब आई थी तो उसने share किया था, so like हम सब के साथ में that I was always like during COVID जब हमको बहुत कम पैसे मिलते थे, even that time कम क्या मिलते थे, वो टुकड़ों में मिलते थे. जैसे कभी 18,000 मिल रहे हैं, फिर 10 दिन तक फिर कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद सिर्फ 6,000 आ रहे हैं. तो इस तरह से चल रहा था. बट कंपनी बेचारी, इट वाज ब्लीडिंग एंड इट वाज पेइंग अस, लाइक दैट. हर बार आते थे तो मैं बोलती थी कल 18,000 आए तो ये मेरे लिए 18 लाख के बराबर है, अच्छा ये 6,000 आए ये मेरे लिए 6 लाख के बराबर है. ऐसे कर करके आई रीच दैट लेवल जब अब मतलब ऐसे आराम से पैसे लाइक फ्लो रहे. सो दैट इज इट. हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट जो होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो उन्होंने सीक्रेट मूवी के बारे में रोंडा बर्न ने बताया है दैट उनको कोलोसल डेप्थ था, मतलब बहुत सारा लाइक 2 मिलियन हम सोच रहे थे, बट उन्होंने पिछले इसी सेशन में हीरो बुक में लिखा है 3 मिलियन था उनके पास, और उनके पास पैसे नहीं थे. बट व्हेन शी वाज सेलिंग दैट सीक्रेट मूवी, और जब वो बन गई तो उनको ये लग रहा था कि इसको सेल करना ही मेरा रीजन फॉर लिविंग है, और कोई अमाउंट ऑफ मनी उस जॉय, उस पैशन को इक्वेट नहीं कर सकता जो है मतलब जब उन्होंने उसको सेल किया. हाँ जी विजय. Michael Acton Smith, I had opportunities to sell this business for very significant amount of money, hundreds of millions of dollars. But I don't want to sail off into the sunset and drink cocktails on a yacht. I love what I do. I want to keep building and creating things and working with extraordinary people. That's what gets me out of bed in the morning. Experiencing the reward from realizing a dream is glorious, and every person who fulfills their dream deserves each and every one of those rewards. Most likely, you will also be filled with excitement and enthusiasm to continue to build on your success and take your dream even further. Now, knowing that you have the qualities and abilities within you to achieve anything you can think of, but this is not the end of your story. This is not the end of this journey. There is one more vital step that must be taken to complete the hero journey,
And it's this final step that causes the transformation of a human being into a hero. A life worth living. Yes. ओके सो या माइकल एक्टन स्मिथ का है, वो कहते हैं कि मैंने अपने बिजनेस की एम्पायर खड़ी कर दी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके, और उसके बाद मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आई जब मल्टी मिलियन डॉलर्स में लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनकी कंपनी खरीदने को रेडी थे। बट मुझे वो नहीं था कि मैं रिटायरमेंट करूं और यॉट पे बैठ के मैं अपनी कॉकटेल पीऊं सनसेट के सामने। वो तो वैसे भी इनकी जिंदगी में हो ही रहा होगा और मल्टीपल टाइम्स हुआ होगा। बट ही सेड दैट आई डिडंट वांट टू, आई लव्ड माय वर्क, जो मैंने जिस स्टैंड जहां तक मैं उसको लेके गया, एंड आई वांटेड लाइक यू नो एंड क्रिएटिंग थिंग्स एंड वर्किंग विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल इनका गोल था। सो विच इज एक्चुअली सो अमेजिंग, है ना। सो तो स्टीव जॉब्स भी जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की तो उनके इतने अच्छे एम्प्लॉयज थे कि वो तो आई थिंक 57-58 पे उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो उनके जो सक्सेसर थे वो उनसे भी डिलीजेंट निकले। मतलब इस तरह के एम्प्लॉयज जब होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ वर्क करने की ना बात ही अलग होती है। यू लर्न सो मच फ्रॉम देम। आई मीन आई हैव द प्लेजर ऑफ वर्किंग विद द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, दीपांशु खुराना हु वाज वन ऑफ माय सीईओज, you know, and then of course Amit Katyal, oh god, the dynamism he has. And wo hi nahi, he's not just the CEO he of this huge organization where I work. He was like, he's just quit a while ago, बट उनका वो जब बोलते थे ना तो मैं नोट करती थी पॉइंट्स, जैसे वो नॉर्मल चीज बोल रहे हैं, मतलब वो पीएनएल शो कर रहे हैं, ठीक है। और वो मीटिंग में और उसमें भी मैं उनके सेंटेंसेस लिखती थी, बिकॉज ऐसे लगता था माय गॉड, ऐसी भी किसी की थॉट प्रोसेस हो सकती है कि वो इस तरह से बात कर सकता है टू सो मेनी पीपल। अमेजिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स, क्या उनका डिक्शन था। फिर जब मैं एक बार ऐसे ही, हम वी वर जस्ट सिटिंग वन ऑन वन बोथ ऑफ अस इन हिज रूम, एंड आई वाज टेलिंग हिम दैट यू नो आई वांट टू शो यू दैट हाउ द वे यू स्पीक एंड यू नो लाइक आपकी कितनी नॉलेज है, आर्टिकुलेशन इतना अच्छा है, डिक्शन अच्छा है, चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छा है कि आप जब बोलते हो तो मैं लिखती हूँ। फिर मैंने वो ना हर महीने मीटिंग लेते थे ना, जो मंथली मीटिंग्स होती हैं। सो हर महीने का मैंने अपनी डायरी में उनको लिख के दिखाया, बिकॉज आई डू अ डेली डायरी, लाइक सुबह जाके वो टू डू लिस्ट, तो वो जब भी बोलते थे वो सब लिखा हुआ था। एंड आई टोल्ड हिम, सी दिस इज व्हाट आई डू, आई लर्न सो मच फ्रॉम यू। एंड नॉट जस्ट दैट, आई मीन द लुक्स, द फिटनेस, इट इज लाइक अमेजिंग। उनकी फिटनेस, चाहे वो मतलब लिटरली ग्लोब ट्रॉटर, you know, working as a CEO of one of the biggest corporates there, he was constantly flying from one country to the other, कुछ पता नहीं होता था कहाँ है, ऑफिस में कभी आते नहीं थे। बट हिज फिटनेस regime, you have to see like toned flat tummy, absolutely, you know, and you know that level of, in spite of being in this, so it's not that उन्होंने अपनी looks को, one of the most well dressed person, अगर वो सिर्फ डेनिम्स और स्वेटर में भी होते थे ना, he would look so good because of the kind of body he had maintained, you know, and it was not gifted because we knew he works at it. मैंने उनको देखा है जब हमारे lunch and meetings जो होते हैं, so of course there is a beautiful buffet and खाना gets ordered from the best of the places and all of that. So you know what, he would just take 4 pieces of paneer tikka. That was his lunch after constantly talking. And 9:30 बजे मीटिंग शुरू हुई है, 2:30 बजे we have broken for lunch and it is lunch meeting, so even then we are still talking, but he would take those 4 paneer tikkas. तो मुझे फिटनेस, मुझे खाने पीने का वो सब भी उनसे सीखने को मिला, you know, that kind of an insane discipline that he had. So it is so amazing to work with a good extraordinary people in your life, like ये दोनों जो मेरे coworkers रहे हैं, colleague, mind blowing, you know, jo inka vision, inka thought process, they are, both of them are not with the company anymore, but both of them were the CEOs, and it was really amazing. And this is the reason एक बार अमित कत्याल का वर्ल्ड योगा डे पे एड्रेस करना था उनको, और मैंने जितने भी लोग हमारे साथ उस टाइम थे, उस वक्त यू नो लाइक मैंने आप सबको लिंक दिया था, और वो वर्ल्ड योगा डे पे उनको बोलना था। मैं बस आप सबको जो उस वक्त हमारे साथ थे, तो मैं बस ये बताना चाहती थी कि एक बार उनको सुनो, और उनको जो उन्होंने, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए उन्होंने बोला था, सुबह 8 बजे जूम लिंक था और उनको सिर्फ 10 मिनट के लिए बोलने आना था, और मोस्ट ऑफ यू ऑल हैड जॉइंड दैट टाइम, यू नो, जब उनकी वो स्पीच थी जो मैंने जूम लिंक किसी ग्रुप पे डाल दिया था। सो सुनैना ने वो पॉइंट्स नोट डाउन किए, तो आई डोंट नो वेदर सुनैना अभी है नहीं है, बट उन्होंने वो सारे पॉइंट्स जॉट डाउन किए,
कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या बताया था और फिर शेयर किया था, जस्ट इन केस पीपल हैड मिस्ड इट इन दिस सेशन, तो सुनैना जॉट डाउन करके बताए थे. दैट इज हाउ हिज बिन, यू नो, लाइक रियली अमेजिंग, इनक्रेडिबल. सो अगर जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है ना, just don't leave that opportunity, and learn from them, talk to them, hear more, like make your own points अगर कुछ ऐसी चीज पता लगती है, because that's what real growth is, and this is what I've seen in my personal life. I think मेरा diction, मेरा articulation, मेरा choice of words इन दोनों लोगों से बहुत ज्यादा आती है, who have really influenced me in my life. And that is what it is. So Rhonda Byrne अपना वो बताती हैं that most likely you will also be filled with excitement and enthusiasm to continue to build your own success story. So henceforth, write your own success story. Script it, work on it, dream it, talk it, write it, visualize it. Whatever it takes, make your own success story. We all have to do that. टू एट वट एवर प्लेस यू आर इन. जैसे मैंने बताया कि कई लोग सोचते हैं मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैं कैसे अपनी एम्पायर बिल्ड करूँ. नो, आई मीन जस्ट डू इट. इनविजिबल रेल में जो आपकी प्रेयर्स, आपका ग्रेटिट्यूड जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपको पता नहीं है दैट आफ्टर 5 years और आफ्टर 2 years वेयर आर यू गोइंग टू बी. आई मीन यू माइट जस्ट बी एट सम फैंटास्टिक पैलेस ऑफ कॉन्शियसनेस, एज दे से मेटाफोरिकली. You don't know, just do what you have to do and leave the rest to the universe and make your own brand. That's very very important. फिर उसके बाद रोंडा बर्न एंड में बोल रही हैं, there's one more vital step that must be taken to complete the hero's journey, and it is this final step that causes the transformation of a human being into a hero. है ना, as a human being who's become a hero, he is not a born hero. He has transformed his mindset, soul set, and everything to become that hero. So it is a journey. So enjoying that process is very important. While we know that this is the end goal, but enjoying the process and building up on it, like enjoy your journey, enjoy your setbacks, enjoy your failures, quickly learn, get up and start walking, crawling, running, whatever it is. That is what. And कल से हम last final transformation topic शुरू करेंगे, है ना, अ लाइफ वर्थ लिविंग. सो दैट इज व्हाट, जब हम हमारी जिंदगी उस मुकाम पे पहुंच गई है और हम पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी को देखते हैं और बोलते हैं वाओ दीप्ति, ब्रावो, गिव अ पैट ऑन योर बैक दैट यू हैड अ लाइफ वर्थ लिविंग, you've lived well. That is so important, and that's what we'll start. And thank you, Vijay ji, so much for Thank reading you. so Thank you. beautifully and very Yeah. important topics. Yeah. Yeah, thank you so much. Thank you. Ma'am, it was Amit Katyal and other one. Panshu Khurana. So Amit Katyal is one of the 3 people I will be doing gratitude to today. Amit So, Katyal and the will other be person you said? Dipanshu Khurana. Purana. Thank you. Katyal sir has got an immaculating personality too. He's so charismatic, ma'am. है ना? You were there that time when Amit was Yeah, speaking. I was there. I know. I Even couldn't I note was it down, there. but somehow I forgot. Acha, I was you were going there. to So my you heard him, Yes, ma'am, right? we I were mean, there. isn't he like out of the such world, surreal immaculating person? personality is. Yeah. Yeah. And imagine आप दिन रात उनके साथ काम कर रहे हो, ऐसा कोई इंसान जो इस तरह And से he's that सोचता है, young. इस तरह से कितने बातें young है करे. वो? He's a youth actually. Can be a young He Turk looks youth. also. He's not that young. He's made himself a youth. वो Oh, उनकी wow. एज ही नहीं बढ़ रही है. वो तब शुरू से वैसे ही है जब से कॉलेज से निकले हैं. He is basically a chartered accountant and Wow. one of from the best university of chartered accountants से हैं वो, उन्होंने professionally, but yeah, oh my God, he is like both of them have taught so much. मैंने आपको हमेशा बताया, दीपांशु खुराना से मुझे diligence check मिला है. पीपीटी बनाई है तो उसको flawless कैसे बनाना है, तो वो हमेशा सिखाते थे कि जब काम करते हो तो अपना पूरा फोकस और अटेंशन उस काम को दिया करो. और मैं तो इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ, लेकिन किताबें लिखती हूँ तो वो इंग्लिश भी चेक करते थे कि दीप्ति तुमने सेंटेंस के बाद स्पेस डाल के फुल स्टॉप लगाया है, मैंने देखा उसमें. एंड आई वाज लाइक व्हाट, उस वक्त मुझे लगता था कि व्हाई इज ही सीइंग दिस, प्लीज गो ऑन द कंटेंट दैट आई हैव क्रिएटेड. So he would read the content that I create. He was not from my field, he is an MBA. So but then like that is, and then picking out things from there and telling me मतलब उनके इनपुट्स की वजह से इतनी पॉलिशिंग आई है ना मेरे राइटिंग में, मेरी स्पीच में, मेरे डिक्शन में, मेरे कंटेंट जो मैं क्रिएट करती हूँ. Like it is so amazing because I gave myself an opportunity to learn and grow with them.
वो तो सबके ही सीईओ थे सिर्फ मेरे थोड़ी थे, 50,000 लोग होंगे जिनके वो सीईओ हैं. सो इट इज नॉट लाइक तो ग्लोबल हमारे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के. वी आर इनटू एजुकेशन, वी आर इनटू वेलनेस, वी आर इनटू न्यूट्रास्यूटिकल्स, वी आर इनटू प्रोडक्ट्स, लाइक बहुत सारे वर्टिकल्स हैं हमारे. बट देन एंड हर जगह ही बहुत सारे लोग हैं जो उनसे ले सकते थे. बट मैंने जितना मिल्क किया है ना उन लोगों के एक्सपर्टीज से, मैं बता नहीं सकती. दैट माय लाइफ हैज चेंज्ड आफ्टर दीज टू पीपल हैव कम टू माय लाइफ. No matter what. So Dipanshu Khurana of course had told me once, I don't know what had happened. कहते हैं ना कि जब low moments या वो moment आता है when everything, all the doors of the life shut. So वो moment भी मेरा उन्हीं के साथ आया था, when he just said that you see another month, otherwise we will have to do something about you. And so that is when I had decided that from Dipanshu Khurana I'm going to get the best employee award at my organization globally. And then I got that in 2019 July 12th. That Sorry, was I'm your sorry, supreme July order, ma'am. 10th. Yeah. वही supreme So, order था आपका. I ask हाँ. one question. What हाँ जी. one quality which extraordinary people have, like Amit Katyal or anybody, Dipanshu Khurana, what one quality you look at which is extraordinary in that people? Passion for work. Okay, that's Yeah, I could see their passion for work. Like the moment he would get down, हमको पता होता था कि 5 घंटे रिप्लाई. जैसे मैंने अमित को कुछ मैसेज किया, and he would never allow us to call him sir and G, like Amit G, Amit sir. He was like, my name is Amit. Please identify, let me identify with that. Don't call me some weird names. And I also respect. He said, come on, go global now. Nobody calls anyone G and sir and Bhaiya anymore. Just call me my name. So we actually call him Amit. Dipanshu Khurana ko hum Dipanshu sir bolte the, but Amit never allowed us to call him by any other name. He said, please call me Amit. So it was like that. So हमको ये पता होता था कि वो लॉन्ग फ्लाइट में, अगर मैंने उनको मैसेज किया है शाम को 5 बजे and I wanted, either it was an approval or it was some question that I wanted to do, that should I go ahead with this and I'm thinking of this, what is your idea, ऐसे कर करके. तो अगर 6 घंटे रिप्लाई नहीं आया, रात को 10 बज गया, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, तो फिर वो 10 बजे, जब वो, हमको पता होता था कि वो फ्लाइट में, अदरवाइज ऐसे हो ही नहीं सकता दैट ही डज नॉट इंपॉर्टेंट मैसेज को रीड करके उसको रिप्लाई करना. पैशन फॉर वर्क इसको कहते हैं कि आप किसी और कंट्री में ट्रैवल करके जा रहे हो, आपने 7 आवर्स की फ्लाइट ली है, एंड देन यू लैंड, एंड देन एज अ सीईओ उनके पास हंड्रेड्स ऑफ वो होते होंगे, एंड देन वट एवर वॉज वर्क रिलेटेड ही वुड रिप्लाई. Whatever was work related, he would reply. And immediately that reply would come at 10:30, means he's just landed. That was his passion for work. Amazing. And in the morning, his workout regime. And then he said that मैंने तो अपने घर में ही, क्योंकि मेरा इतना busy चलता है, मैंने अपने घर में ही ऐसे कर लिया है. So extremely, insanely progressive. That means passion for work. This is what I learned from them. And they are all employees, salaried people. They were both employees to the organization where I worked. Totally salaried people. चाहे वो 6 घंटे काम करते, चाहे वो 4 घंटे काम करते, उनको सैलरी हमको उतनी ही मिलती है, ठीक है. लेकिन in that giving your so much all out, I think उन दोनों ने all out दिया है. तो उनसे मैंने सीखा है कि मुझे भी all out देना चाहिए, that way. So yeah, this is what we can learn from. कहते हैं ना, hang around with extraordinary people, you get to learn so much. Pray that extraordinary people come to your life. Notice small things about them. So that's like really, like that makes us grow, because there's a reason why any person comes to our life. Some people teach us how you should be, some people teach us how you should not be. Okay, दोनों सीख होती है और दोनों जरूरी होते हैं हमारे लिए. मैम इनकी रिकॉर्डिंग है दिपांशु खुराना की जो आप कह रहे हैं? नो. We'll request Sunaina to write the point. Sunaina ने अगर लिखा, I don't know whether Sunaina is not there in this session, but yeah. No, we'll request her personally. So let's And create ma'am, new आपने people जो who are point extraordinary in our lives. Let's create the own people who are extraordinary in our lives. They will come popping out from nowhere into our life, and we'll get to learn दीप्ति, from them. हाँ जी. आपने जो कहा दोनों के लिए, we see all the things in you. Because of them. हमारे लिए तो आप ही हो. सेम डिक्शन, नया वर्ड, स्मार्टनेस, फिटनेस, ईटिंग लेस. मैं तो सारा पॉइंट्स आप में देख रही थी. Yeah, eating less, definitely. I don't abuse my body No, anyway. even the words we learn so much.
आज भी आपने कुछ कहा ब्लीडिंग वाला, आई थॉट कि मैं लिखूंगी, टाइप करूंगी समथिंग, कुछ बोला था मैम ना, आउट ऑफ ट्रूली व्हेन यू आर ट्रूली ब्लीडिंग. अग्री विद मैंने कहा सरिता था जी. कंपनी वाज ब्लीडिंग दैट टाइम बट स्टिल दे वर गिविंग टू अस. यस, सच अ ब्यूटीफुल सेंटेंस. फिर मुझे लगता है मैं या यूज करूँ इसको, सो दैट आई लर्न एंड डोंट फॉरगेट. थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग यूज करिए आप. यस, वो वर्ड में थ्राइविंग एंड आपको फ्लरिशिंग तो इज इन माय my डिक्शनरी life नाउ. is thriving and flourishing. My health is thriving and flourishing. My relationships are thriving and flourishing. Okay, my career, my business is thriving and flourishing. I'm coming across amazing people in my life from whom I'm learning so much. I'm happy. My vacation is my vacation. I'm traveling the world. I always have surplus money to give. To spend wherever I need to and to give to people who I want to. So these have to be, I'm born to lead and shine. I'm amazing. I'm feeling and looking younger day by day. I love my beautiful skin and my beautiful hair. Thank you for making me look so good. I really love being fit. I love the idea of being like really fit and healthy. I love the idea of having so much energy to do everything. I love the idea of having a very healthy body cells and all the organs. I love being surrounded by beautiful people. I love beautiful sunsets and sunrise. I love the color of the amazing flowers. This has to be our auto suggestion, and this is called rampage. So when you're on the rampage, even for 2 minutes, अगर आप सिर्फ अच्छी चीजें देखते हो तो आपके सेलुलर लेवल पे, क्वांटम लेवल पे बहुत बड़ी शिफ्ट आ जाती है, and you start attracting those things into your life. Isn't it? That's how it works. यस So यस. get into those rampage आप zones तो sometime. कंटिन्यूअसली इतना ब्यूटीफुली बोल दिए कि सोचते रह जाते हैं. मैं हमें Bye bye. वी सोचना हैव टू पड़ता है, आप डिग. इतनी इजीली बोल जाते हो, हमें सोचना पड़ता है हम यस. अगला सेंटेंस क्या बोले. आप इतनी अच्छी तरह, इतनी इजीली, इतनी फ्लुएंटली बोल जाते हो, पता नहीं कैसे बोलते हो आप. मैं ट्राई क्योंकि करती ये हूँ सोच रिपीटेड सोच है में ना बोलूं. ऑटो सजेशन. ये रिपीटेडली मेरे दिमाग में चलते हैं. वेरी नाइस, सो या स्वीट. दैट वे. नहीं तो देखो, या तो उल्टी सीधी चीजें दिमाग में चलती है और वो यस बहुत नॉर्मली हो जाता है. मेल्स के केस में इतना नहीं होता, उनको थोड़ा, फीमेल्स के केस में बहुत इमोशनली ड्रिवन होती हैं. तो बहुत जल्दी ऐसे, मतलब कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट आ जाएगा तो उसमें हम ड्वेल करना शुरू कर देते हैं. तो या तो दिमाग में वो सब चलती है, इससे अच्छा यही चलाते हैं ना, इसकी रिकॉर्डिंग चलाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं चलाएंगे. इसकी यू नहीं आर रिकॉर्डिंग. अमेजिंग, यू आर अमेजिंग मैम. And Dipti, even many people around me, they are seeing changes और इतना बोलते कि wow, you are in such a positive zone and all. So all due to you. Thank you, thank you, thank you. So we give the same to everyone, na Sarita ji. Some Yes. people are sharing and यस giving. So it's like same जो जितने YouTube पे सुन रहे हैं, कितने lakhs and hours of views हैं उसमें. So कई लोग सुन सुन रहे हैं, सुन के अप्लाई कर रहे हैं, कई सुन के नहीं अप्लाई कर पा रहे. सबकी अपनी जर्नी है, लेकिन सबकी जर्नी इंटरेस्टिंग होती है. So मैम, पर कितना एक हम. दिन तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग तो पकड़ेगा ही ना, एक दिन तो हाँ. पकड़ेगा ही. या सो अभी बुद्धिज्म में एक हम वो चैप्टर पढ़ रहे थे दैट व्हेन देयर आर ऑर्किड्स, एवरीवन कम्स इन दैट जोन ऑफ ऑर्किड्स. जब आते हैं तो सब सब ऑर्किड फ्लावर्स बन जाते हैं. इट्स लाइक दैट. सो शिवानी वुड New नॉट sentence लाइक again. मग वर्ड्स इन अ हेम्प, या वो वाला जो कोट था. सो एवरीबडी इज अ ब्यूटीफुल ऑर्किड फ्लावर. यस, यू आर राइट. खरबूजा खरबूजे को देखकर अपने आप ही रंग बदल देता है. And अपने Dipti, आप हो yesterday जाता है. सो जो रोंडा मुझे बर्न के छाया छत्र छाया में हम सब है ना. तो जिंदगी में सिर्फ ग्लोरी है, सक्सेस है, ग्लो है, शाइन है, ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है. तो अब यही है, जब हम वो हमारी वो ऑर्किड फ्लावर है ना, तो उनके फ्लावर के शैडो में हम तो, मतलब हमें हमारा थ्राइविंग तो कम्स बाय डिफॉल्ट. मैम, और कोई Dipti, नेगेटिव चीज दिमाग में आती है ना, एकदम से हिट करता है, कम हाँ बैक टू हाँ पॉजिटिव थिंग्स. ये तो हो रहा है, मतलब कि इट्स कमिंग इन आवर. अब ये चीजें रोज रोज सुन के वही चीज है ना कि बार बार हमें हिट करती है कि कम बैक, हाँ. एंड वी डोंट रियली गिव इट कम एनी बैक. एयर टाइम. डोंट गिव इट yes. एनी एयर टाइम. अगर कोई यस नेगेटिव हो रही है, डोंट गिव इट एनी एयर टाइम. यस. स्टॉप इट, फुल स्टॉप. ट्रांसफॉर्म द एनर्जी. सो एनर्जी को कट तो नहीं कर सकते, बट एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है. जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ वही बर्फ होती है, उसको आप पिघलाओ तो पानी बन जाती है. वही पानी जो है, अगर आप उसको हीट देते हो तो वो भाप बन जाता है. लाइक सो, बट देन फॉर्म तो वही है ना, उसके पार्टिकल्स वगैरह. तो आपने बस ट्रांसफॉर्म की है उसकी एनर्जी, उसके पार्टिकल्स को. इसी तरह से जब नेगेटिव में हम ड्वेल कर रहे हैं, इमिजिएटली ट्रांसफॉर्म कर दो उस एनर्जी को. लाइक थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. कोई बात नहीं ना,
आर्टिफिशियली करना पड़ेगा, फेक करना पड़ेगा, डजेंट मैटर। ठीक है, धीरे धीरे वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू का रट लगा लगा के आप उस जोन में चले जाओगे जहां पे वो पेनिट्रेट करेगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और जो वो चीज थी जिससे आपको दुख पहुंच रहा था उस जगह पे वो एनर्जी पहुंचेगी और उसको हीलिंग एंड रिपेयरिंग करना शुरू कर देगी, लाइक द बेस्ट सर्जरी इन दैट एरिया। और उसमें से जो आउटकम आएगा उस सर्जरी का रिजल्ट जो होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, वो परफेक्ट होगा हमारे लिए। तो इसी तरीके से हमको जीने का तरीका सीखना है, विच इज ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। सो वी बेसिकली जस्ट ट्रेनिंग आवरसेल्व्स mentally. So yeah, thank you so much. Let's get going. Today I Thank have to you. go early to Thank you, office. ma'am. Thank you. Thank you, Amazing. Thank you. Dipti. you, ma'am. And Dipti, Thank you yesterday so तुमको Thank जो you so much, विशेष ma'am. मुझे Thank मिला you. है जी एनिवर्सरी, Thank you उसका so much, जितना ma'am. विशेष मिला है, 2 lines were wishes and the rest were full of praises. And I am ready to accept because you have taught कि कोई बोलता है तो ना ना नहीं करना चाहिए. हाँ, नहीं नहीं, Yes. कोई भी तारीफ करता है तो बहुत ग्रेसफुली बोलो यार, थैंक यू सो Yes. मच, इंस्टेड ऑफ नहीं नहीं मैंने तो कुछ किया नहीं, किया है आपने, उसी का Yes. आपको प्रेज मिल रहा है। सो And या even लिफाफास जो मिलता है now I accept readily कि चलो दिए हैं, it is a blessing, keep it. Otherwise लोगों को पहले तो मनी लड़ते रहते एक्सेप्ट थे किया कि नहीं नहीं जाता चाहिए. है यार। हाँ, इवन आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट मनी, सो या Yes. बिकॉज मैं आई ना Thank अब you ऑलवेज हम so बीन बोलते much. हैं फाइनेंशियली मैं ना अब हम इंडिपेंडेंट। बोलते हैं थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पहले हम बोलते नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आप हाँ, बोलते ऐसी, थैंक नहीं यू हाँ. फॉर ऐसा द क्या है, मैं तो कॉम्प्लीमेंट। नॉर्मल हूँ। या थैंक यू Yes. बिकॉज अब हम बोलते एक्चुअली Thank you, थैंक यू, ma'am. दैट्स कॉल्ड सेल्फ Thank वर्थ। you. Thank you. लोगों थैंक से यू सो पैसा मच। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना और लोगों से कॉम्प्लीमेंट ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना वो सेल्फ यस वर्थ होती है। ठीक है, मनी मास्टरी Yes. वर्कशॉप में सिखाया जाता है कि कैसे आप लोगों से पैसा एक्सेप्ट करो। अगर कोई आपको गिफ्ट कर रहा है या कहीं से पैसे या पैसे वाली चीज आई है तो बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। मैं भी ये सीख रही Yes. हूँ क्योंकि मैं शुरू से इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही हूँ दैट लाइक मेरा कभी वो नहीं था, लाइक वो पैरासिटिक वो नहीं था। तो मैं कभी पैसा ऐसे एज सच, मतलब जब से कॉलेज से निकले हो तब से ही मैं, फ्रॉम द डे व्हेन आई वाज स्टिल डूइंग माय मास्टर्स, आई हैड स्टार्टेड वर्किंग, सो ऑलवेज बिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मुझे बहुत वो लगता है कोई मेरे लिए बहुत खर्चा करता है या पैसे देता है, बट अब एक्सेप्ट करती हूँ बिकॉज दीपक का ये है कि जैसे कोई पेमेंट आती है तो मुझे 100 USDs मिल जाते हैं, और ये उन्होंने रिचुअल बनाया हुआ है, लाइक कितनी भी पेमेंट आई हो मिलते हैं 100 ही है, वो 120 भी नहीं मिलेंगे। 100 USDs मिलते हैं। बट आप सोचो कि मेरे पास कितने 100 USDs इकट्ठा हो गए होंगे, दैट अभी मेरी कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप होगी तो उसमें लाइक, एंड यूएसडी का तो बढ़ ही रहा है ना वैल्यू with the passage of time. There was a time when it was 50, 55. Today it must be like 90 for 1 USD. So, Yes. but 83. तो वो बहुत मल्टीप्लाई हो रहे रखे हुए वो अपने आप ही। सो इस तरह से वो है। तो पहले मैं बस पहले वाली दीप्ति होती तो मैं बोलती अरे नहीं, जस्ट कीप दैट मनी, बच्चों के लिए बच्चों को दे दो, लाइक उस तरह से दैट्स हाउ मम्स थिंक। सो इट्स लाइक उनको दे दो, ये कर दो, उनको दे दो। बट नाउ आई जस्ट टेक, आई सेड ओ यू हैव नॉट गिवन मी माय 100 USD। अगर जैसे मुझे खुद पता लगता है। So yeah, changing myself slowly and gracefully accepting things and gifts, And reward. even we have become a giver, ma'am. Dipti. यस Yeah, yeah. We have, You become giver yeah, only एकदम when you दिल से receive. That's देते very जाते clear. हैं. You don't Yeah. receive till the time you've not Yeah. given. Giving तो मैं No, कितने no, टाइम no. से Always हम्म इट a वाज giver. लाइक मैंने तो कोविड के टाइम ही डिसाइड कर Yes. लिया था आई स्टार्ट स्पॉन्सरिंग एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स एंड व्हाट ऑल थिंग्स, लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई डू इन माय लाइफ, आई डोंट, I'm not comfortable talking about them, but yeah, there are certain things I do in my life that has been station, मतलब उसमें वो नॉन नेगोशिएबल एरिया है मेरी जिंदगी का, चाहे मेरे पास कितने भी पैसे आ रहे हो। ठीक है, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, नहीं है, किसी महीने बहुत ज्यादा सबके खर्चे हो जाते हैं, है ना, जैसे दिवाली का महीना है तो बहुत खर्चे हो जाते हैं। बट मेरे वो एरियाज जो मेरे लाइफ के हैं जहाँ पे मुझे पैसा डालना होता है ताकि वो पैसा फ्लरिश करे किसी की जिंदगी में, वो मेरे नॉन नेगोशिएबल एरियाज हैं। नॉन नेगोशिएबल वर्कआउट्स भी है, नॉन नेगोशिएबल मेरी हेल्थ भी है, बट वो एरियाज मेरे लाइफ के जहाँ पे मुझे बहुत जेनरसली गिव करना पड़ता है क्योंकि मैंने अपने आप को चॉइस नहीं दी हुई है कि मुझे मुझे करना है कि नहीं करना है।
जैसे रोज सुबह उठ के आप ब्रश करते हो, आप अपने आप को चॉइस नहीं देते हो कि मैं शुड आई ब्रश टुडे, शुड आई नॉट, एंड नाउ दैट्स बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो वो जो मेरे एरियाज ऑफ लाइफ है, आई हैव टू एंश्योर दैट आई डू इट, दैट कंटिन्यूज. एंड तो पहले वो सब गिव किए ना, उसके बाद रिवॉर्ड्स आने शुरू हुए, उसके बाद चीजें लाइफ में चेंज होनी शुरू हुई है इन अ वेरी बिग वे. सो एनीथिंग, मतलब वो करो, पहले करोगे तभी वो रिसीव होगा, नहीं तो नहीं होता. अगर प्यार चाहिए जिंदगी में, पहले दोगे वो आएगा. इज्जत चाहिए तो पहले दोगे फिर आएगी. पैसे चाहिए तो पहले दोगे फिर आएगी. सो दैट इज हाउ वी ऑल ग्रो इन लाइफ, एंड दीज आर द टीचिंग्स एंड लर्निंग्स. Chalo then, enough of Gyan. Today we've studied. Yeah. Both the beautiful Thank you books. so much, ma'am. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you, Dipti. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, Thank you so much. Thank you I'll so see you much. tomorrow. Ma'am, Thank you. thank you so much. Hi, have a Thank you for beautiful, everything. magical, Thank you, day. ma'am. Thank you so much.